morning, students. In previous class, learn about meaning and definition of physical education, aim and objective of physical education. Now, next topic is career options in physical education. There are following career in physical education: teaching career, coaching career, professional player, sports officiating, health related career, sports administration, and media and communication related career. We will describe one by one following career options. First of all, we discuss about teaching career in physical education. Physical education is a professional field offering a teaching career with many rewards to the teachers, whether they are engaged in elementary school, middle school, secondary schools, or senior secondary schools, colleges, or universities. At different level in the field of physical education, teaching opportunities are available on elementary school, high school, and senior secondary school or college and universities. Second career option is coaching career. Coaching is also a traditional career in the field of physical education. Numerous physical educators have a preference to choose coaching as a career as there are enormous job opportunities for coaching in the field of physical education. A probable coach should acquire a diploma course in concerned game or sports. Next career is health related careers. There has been a remarkable increase in the awareness of health since the last 20 years. The most significant area under health related career is health and weight control clubs, as these clubs have increased rapidly during the last decade. Next career option is administration related careers. In various fields, administration related careers opportunities are now available, such as sports administrator, management of sports clubs and facilities, sports marketing and promotion, etc. The career related to administration and physical education are Department of Physical Education. Students work as a director of physical education in various departments. Work as a director of sports, district as a district sports officer in various districts. Industrial recreation. Student work as a recreational instructor in various companies. Is career opt as a sports facility management. Facilities manager and supporting staff are essential to maintain the facilities like gym, health club, fitness center, stadium, sports complex, ice arena, and aquatic center or swimming pool. Next career is performance related career. Performance related career, individual work as a professional player or as a coach. Next career is media and communication. Individual works as a sports journalist, sports photographer, sports commentator. He writes sports books or books related to sports, physical education, etc. Work as radio or TV commentators. So these are the students' career option इन फिजिकल एजुकेशन. तो फिजिकल एजुकेशंस में हम जो डिफरेंट फील्ड है उसमें कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल कैरियर है टीचिंग और कोचिंग का, उसमें कैरियर बनाया जा सकता है.
ऑफिशिएटिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाया जा सकता है, हेल्थ के क्षेत्र में कैरियर ऑप्ट किया जा सकता है, हेल्थ के क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट होकर के कर सकते हैं कैरियर ऑप्ट, स्पोर्ट्स डाइटिशियन बन सकते हैं या फिर जिम इंस्ट्रक्टर बन करके कार्य किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अगर हम कार्य करना चाहते हैं तो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में हम कार्य कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, वेरियस मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ के रिक्रिएशन के लिए डिपार्टमेंट होता है जिससे उनको स्ट्रेस को कम किया जा सके। उस फील्ड पे हम एज ए डायरेक्टर वर्क कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ मैनेजर होकर के काम किया जा सकता है, जैसे कि जिम है, स्विमिंग पूल है, स्टेडियम है। इसके बाद हम मीडिया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के रूप में कार्य किया जा सकता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किया जा सकता है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, और लास्ट हम लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स और मैगजीन लिख करके कैरियर बनाया जा सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स। इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट गेम्स पढ़ेंगे और उस गेम्स में उसके नेशनल लेवल के कंपटीशन और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गेम आर्चरी। आर्चरी के जो नेशनल लेवल गेम है, नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन। इसी प्रकार इसके इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ओलंपिक गेम्स, आर्चरी एशिया कप, समर ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स के नेशनल गेम्स, नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, फेडरेशन कप। इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करें तो ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, IAAF कॉन्टिनेंटल कप, एथलेटिक्स वर्ल्ड कप। बैडमिंटन नेशनल गेम्स, नेशनल कप, सफ़ी कुरैशी कप, नेशनल जूनियर टीम वोमेन, मेयर्स कप। इंटरनेशनल टूर्नामेंट की अगर बात करें बैडमिंटन की तो सैयद मोदी चैंपियनशिप, विल्स वर्ल्ड कप, थॉमस कप, उबेर कप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। बास्केटबॉल नेशनल चैंपियनशिप, फीबा वर्ल्ड कप, फीबा FIBA, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है फीब का। इसी प्रकार से हमें जो डिफरेंट गेम्स है उसके नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में जानना है, जैसे फुटबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, जूडो, वॉलीबॉल, हॉकी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक नेशनल एंड इंटरनेशनल tournaments of various games and sports. Our next topic is Khelo India program. Khelo India is a national program for the development of sports. It was launched in the year 2018 by the Government of India. This program has been launched to revive the sports culture in India at the grassroots level. In the inaugural function, PM Modi said, Khelo India is not only about winning medals, it is an effort to give strength to a mass movement for playing more. We want to focus on every aspect that would make sports more popular across the nation. Objectives of Khelo India program. खेलो इंडिया प्रोग्राम को जो इस्टेब्लिश किया गया है, इसके क्या उद्देश्य है, जबकि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन को लाना है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये भी एक उद्देश्य है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्लेफील्ड डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ ए नेशनल इन्वेंट्री ऑफ प्लेफील्ड एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय GIS
and development of playfield at various state and district level. Next objective, community coaching development. This involves skill development and certification system for sports coaching. This is aimed at evolving and identifying physical education teachers and training them as a master trainer with online courses also included. Next objective, state level Khelo India centers. This involves supporting better utilization of sports infrastructure in relation of the state union territories through MOU. Next objective is annual sports competitions. Under the scheme, the central government will organize the following national level competition: Khelo India National Games and the Khelo India National University Game, collectively known as Khelo India Youth Game now. Next objective is talent search and development. A talent identification committee is included to spot and identify talent with the help of globally accepted scientific methods. Next objective is utilization and creation, upgradation of sports infrastructure. As the name suggests, this component aim at developing sports infrastructure at school and universities demonstrating high sporting potential. Next objective is support to national, regional, state sports academies. This component take care of providing resources under public-private partnership PPP mode for expediting and augmenting long-term athlete development program. Next objective is physical fitness of school-going children. A tool kit will be developed under the scheme to measure the children's physical fitness level. Sports for women. The entire scheme is gender neutral. There is a proposal to conduct annual national competition especially for women. Next objective is promotion of sports among persons with disabilities. Financial assistance will be provided to state and union territories as well as the Sports Authority of India for the creation of special sports infrastructure for persons with disabilities. Next objective is sports for peace and development. Under the special package for J&K, the government of India is providing fund of up to rupees 200 crore for enhancement of sports facilities in the state. In addition to the above, concentrated efforts will be made at organizing village level competitions with respect to sports discipline popular in the state to ensure positive engagement of youths. Next objective is promotion of rural and indigenous tribal games. Under the scheme, annual competition will be organized to showcase India's rural and indigenous tribal games alternately. Khelo India Youth Games. Khelo India Youth Game, formerly Khelo India School Games, meaning Play India Youth Games, held annually in January or February, are the national level multidisciplinary grassroots games in India held for two categories, namely under 17 years school student and under 21 college students. Khelo India selection criteria. Selection of talented athletes is made on the basis of Khelo India Youth Game. The top performers in their priority discipline are selected and provided assistance. Athletes from all parts of country can register for Khelo India selection program. Every year, best 1000 kids will be given an annual scholarship of rupees 5 lakh for 8 years to prepare them for the international sporting events. So these are the objectives of Khelo India program. Khelo India program गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रखे हैं जिससे कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस टैलेंट को हम कंट्री लेवल पे ले करके आ सके। तो ये थे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशंस। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन गुड बाय।